Hello students. So in this video we will be looking after a short summary of this subject. We know that soon we will be having new examination like on this subject, that is Indian economy, BECE-145. So let's just begin. You can see that we have total 4 blocks. In the first block, that is economic development since independence. Second block is about population and human development, and third block is about growth and distribution, and fourth block is international comparisons. So let us begin with the first block. We can see that in first block, unit 1, the chapter is about economy at the time of independence. The chapter itself explains us that we will be looking after economic condition of India during the time of independence. Okay. So for this, the first topic is Indian economy at the time of independence. Students, I will be giving you short summary, so just try to understand the chapter. We know that we are very closer to the exam, so it's not possible that if I go on covering each and everything. So I will be giving just short summary, which will be essential for you. Like you can understand it, you can just write it down in your exam. Okay, so that you can at least score some marks by just listening to the video. Okay, so please subscribe the channel and do let me know if it is helpful, so that I can make more and more videos, so that you guys can comment in the section and let me know ki next किस पे बनाने क्या नहीं. Okay, so let us just begin without wasting time. So Indian economy at the time of independence, what was the condition during the independence? India की जो economic condition थी वो कैसी थी जब independence का जब time था? First thing, we know that British came in India by like, पहले जब वो आए थे, they came as in like a traders बन के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दे स्टार्टेड somehow by using different ways or different tricks, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके या हमारे लोगों को भड़का के करके somewhere they started getting resources from us, right? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने के बाद they started getting resources from us. So now so many resources were taken away, and somewhere our condition was bad, and economic condition बहुत low चली गई थी India during the time of independence, because we can see that in India mostly we were like, in the beginning we used to have like lot of goods, but later on British used to tell us कि बाबा तुम यही क्रॉप लगाओ, कैश क्रॉप ही लगाओ, यूजुअली रिसोर्सेज वगैरह पूरे हो गए थे. एंड इन दैट टाइम मोस्टली वी वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना. बट वो भी डाउन हो गया था समवेयर. जो ओनली कैपिटल इंडस्ट्री जो हमारे इसमें थी इंडिया में, दैट वाज स्टील. ओके, विच वाज प्रोड्यूस अबाउट 9 lakh tons. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन वाज कि जब इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग टाइम हुआ क्या था कि वी वर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक वी वर फेसिंग फेमाइन कंडीशंस, ड्रॉट कंडीशंस, ड्यू टू विच खाना पीना सब खत्म. दैट इज शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था. दैट्स द रीज़न मेनी पीपल वर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था हर जगह पे, एंड वी वर like about 40% of population was below poverty line. This was the condition at that time. Okay, next point is agriculture. We know that in India agriculture is very important. Okay, that is the main sector of Indian economy. So during the at the time of independence, what exactly happened? 85% of population was dependent on agriculture. Okay, and in that thing, like about, if you consider national income, 50% of the income was from the agriculture. Okay, that was the thing. So we used to cultivate various crops, food crops cultivate करते थे, और थोड़े cash crops मतलब in the sense from where you can अर्न मनी. कैश क्रॉप्स में एग्जांपल आ जाएगा अभी, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, है ना, फ्रॉम विच यू कैन अर्न मनी. एंड ईटिंग क्रॉप वाले फूड क्रॉप तो वीट राइस वगैरह ये तो ग्रो करते थे हम लोग. सो मेन इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स एंड शुगर केन. दीज वर द टू थिंग जो इंडिया में सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूस करते थे. ओके, and in terms of cotton, our India was third largest producer. First was the USA and China, then India was the third one to produce the in a bulk quantity, that is cotton.
Okay, this was the thing about agriculture. In terms of वो टाइम पे कैसा हो गया था, we used to pay taxes and all, because if you see various ज़मींदारी सिस्टम वगैरह आ गया था, जहाँ पे they used to take revenue. रोतवारी एक सिस्टम था, तीन सिस्टम से टोटल, ज़मींदारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम. Okay, so zamindari system was used to cover like 58% of total land. Rotwari was like used to cover like 38% of land, and Mahalwari system used to cover like 4% of area. In this way, they used to take taxes. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जीडीपी बहुत डाउन 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 जा रही थी, बिकॉज एग्रीकल्चर भी थोड़ा नेग्लेक्ट हो गया था सम वे. Unemployment was also at the peak. That means we were facing very bad conditions. Okay, सो इंडियन जो एग्रीकल्चर है, इट वॉज कैरेक्टराइज बाय प्रॉब्लम्स. तीन प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स दी है, यू कैन सी हियर इन द टेक्स्ट बुक. फर्स्ट इज अ लो आउटपुट पर हेक्टर. सो ये शॉर्ट वे में अगर बता दूँ व्हाट वाज दिस थिंग, लो आउटपुट पर हेक्टर. सो जो इनकम जो थी फार्मर्स की, द इनकम ऑफ द फार्मर्स was less and the land revenue was high. That means अगर comparison करें तो land revenue was high and the income of the farmer was less. Now obviously land revenue was high and income अगर कम है farmers की, they were not able to invest anything in the farm, है ना. And government was not worried about taking any measures to improve the soil health and all. सॉइल की हेल्थ वगैरह इंप्रूव करने में कोई गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, बिकॉज इरीगेशन वगैरह ये सब फैसिलिटीज नहीं थे. वी वर नॉट हैविंग एनी गुड एग्रीकल्चरल मेथड. नाउअडेज वी विल बी एबल टू सी दीज मेथड्स, बट in those days we don't have any technique, modern techniques and all, due to which this was the first issue. Second issue देखेंगे तो हम primitive techniques of production. This is what इसमें क्या है in short. So we replaced, in the beginning we used to use iron tools. In this sense we used to use wood वाले, okay, वुड वाले टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, बट वी स्टार्टेड यूजिंग आयरन टूल्स. दैट वाज द ओनली चेंज which had taken place, but this was not making any growth in terms of agriculture. Okay, and this was the thing, जो iron tools भी use कर रहे थे, this was the thing which happened somewhere because of the in short during the British rule this has taken place. ओके, एंड सो दैट्स व्हाट द थिंग इज़. कुछ ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह नहीं थे, एंड एग्रीकल्चर वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर इरीगेशन. जो भी रेनफॉल होता था उस पर डिपेंड था, है ना. थोड़े बहुत कैनल्स वगैरह स्टार्ट कर लिए थे हमने, बट उससे भी कुछ ये नहीं हुआ है. दैट्स व्हाट द थिंग इज़. And though there were like four regions, Punjab, Madras, Western, UP and Sindh, they started using their westland into agriculture because of the irrigation development वहाँ पे हो गया था थोड़ा. Third term is lack of commercialization of agriculture. So in this point, what exactly thing is, uh, ब्रिटिश के टाइम से ये हो रहा था. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली, ब्रिटिश समवेयर वांटेड टू अर्न मनी समवेयर, सो दे यूज्ड टू tell us, or like they used to make sure that ki we are growing commercial crops, that is cash crops, so that they can earn money from that, like sugar cane, cotton, jute, opium. ये सारी चीज़ें हो गई थी. That is that this thing comes under the commercialization. Okay, सो ड्यू टू विच अभी कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, ऑब्वियसली अभी कॉटन जूट कर रहे थे, उसके टेक्सटाइल्स के वगैरह इंडस्ट्रीज भी आ गए थे, है ना. बट द थिंग इज, जब पार्टीशन हुआ, ओके, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन पार्टीशन टुक प्लेस, जितने भी फर्टाइल एरिया थे, ओके, दैट इज़ द फर्टाइल एरिया ऑफ इंडिया इन विच यू कैन एक्चुअली कल्टिवेट जूट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें चलेगी ईस्टर्न पाकिस्तान में. अभी ईस्टर्न पाकिस्तान क्या हो गया सर? ईस्टर्न पाकिस्तान इज द सेंस अभी नाउअडेज वी कॉल इट एज बांग्लादेश. बांग्लादेश के साइड में चले गए. इवन दो इन इंडिया वी यूज टू हैव टेक्सटाइल एंड ऑल इंडस्ट्रीज थे, बट द एरिया वेर वी यूज टू कल्टिवेट जूट एंड ऑल, वो चले गया इन द ईस्टर्न पाकिस्तान पार्ट, दैट इज बांग्लादेश. दिस इज व्हाट द थिंग इज. सो नाउ थोड़े इंडस्ट्रीज थे हमारे पास, उतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, है ना. ब्रिटिश के जाने के बाद भी इंडस्ट्रीज तो यहीं रह गए बहुत सारे. अगर इफ़ यू कंसिडर द मेजर इंडस्ट्री वॉज कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल की मेजर इंडस्ट्री थी हमारे पास, बट सम वे वी वर हैविंग इंडस्ट्रीज, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, बट अगेन वी डोंट हैव एनी फर्टाइल रीजन टू ग्रो द कैश क्रॉप्स, है ना. एंड सम वे ब्रिटिश themselves started railways like in about 1853, so that they can, like, it can be easy for
them to travel, है ना, because they used to travel इधर से उधर वो जल्दी होना चाहिए, इसलिए उन लोगों ने somewhere they introduced a railways, जिसकी वजह से हमारे इसमें एक्सपेंशन हो गया, समवेयर मार्केट वगैरह में एक्सपेंशन हो गया. सो लाइक अबाउट इन 1947, बाय द 1947 there were like total 42 rail systems in India, but still industrial development was not developing there, it was remained stable, कुछ development नहीं आया. That's what the thing is. Now later on what exactly happened, अभी वर्ल्ड वॉर्स भी हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर होने के कारण भी फिर और डाउन 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 जा रहा था. एंड अगेन the TISCO, that is TISCO, Tata Iron and Steel Company. Okay, this was the company which got established during the period of 1905, and that was the major capital industry of India till the independence, because it was the company which used to deal with the iron stuff. So that was the company. Okay, and some way, even though the establishment of this company took place, but even they have to get the engineers from the Britain, because हमारे पास ऐसे कोई लोग नहीं थे जो हैंडल कर पाते उसको. दैट द रीजन दे यूज्ड टू कॉल पीपल फ्रॉम द Britain so that they can look after these things. And later on I already told you about the what exactly happened. Industries वगैरह तो थे, but material जो agriculture ग्रो ने raw material था to grow these material like jute वगैरह हो गया. So these areas were in the eastern Pakistan, and there were few areas which got like because अभी जो पार्टीशन हो रहा था वो टाइम पे क्या हो गया, कुछ एरियाज पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में फिर वो हो गया. इन शॉर्ट, in India there were like completely 112 jute mills, but 85% of the like total jute growing region was in the eastern Pakistan. So you can consider here 112 jute mills हमारे इंडिया में थे, but 85% area जहाँ पे jute grow कर सकते तुम, that way that just went in the eastern Pakistan, that is the Bangladesh. Okay, and the best cotton growing region, that is the region where you can grow best cotton, it became a part of Pakistan, that is Sindh and western Punjab wala region में चला गया. That's what the thing is. इतने सारे mills थे, workers used to work there, but because of no resources these mills got closed and the workers were facing unemployment. This was the second thing. यहाँ पे फिर से ड्रॉबैक हो गया, जिसकी वजह से we went really really down. And in terms of, now the next point is currency and financial sector. In terms of banks वगैरह तो कुछ थे नहीं हमारे पास, राइट. एंड इंडिया यूज टू डील विद द करेंसी. अगर वो टाइम की करेंसी देखिए दे, वो टाइम पे पैसे वगैरह कुछ नहीं थे. वो टाइम पे वी यूज टू डील विद द monometallic silver standard, that is only silver coins were in the circulation from like period of 1835 to 1893. Okay, अभी समझ सक रहे हो तुम लोग कि the circulation was done, the only method of like trade was based on silver, so there was high demand of silver. Due to this we used to import silver somewhere from somewhere. That's what the thing is. अगेन लेटर ऑन एक सडन चेंज आ गया कि सिल्वर का रेट बहुत बढ़ गया है. सडन चेंज केम ओवर वेयर द प्राइस ऑफ सिल्वर राइज्ड, ड्यू टू विच अभी हमें सिल्वर से डील करना हार्ड हो रहा था. एंड लेटर ऑन इन द लाइक 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंट्रोड्यूस पेपर मनी, यहाँ पे पेपर करेंसी वगैरह आ गया. फिर लेटर ऑन वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ अमेरिकन डॉलर एंड ऑल दीज थिंग्स. सो फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें नॉन बैंकिंग और बैंकिंग है, फाइनेंशियल मार्केट्स दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, एंड द थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विसेज which help in mobilization of savings and increase capital formation. Okay, in India there were not like banks, there were no banks and all. So like few banks थे. सो बैंक्स मतलब ना के बराबर ही थी, इसलिए जिसको भी पैसा वगैरह चाहिए होता है वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू टेक इट फ्रॉम द मनी लेंडर्स. मनी लेंडर्स वन द लाइक मेजर सोर्स फ्रॉम वेयर दे यूज टू लेंड मनी, एंड दे यूज टू लुक आफ्टर द स्टफ दे वांट टू डू. इंडिया में ऐसे चलता था पहले. सो later on in like 1786 first bank in India was established. बट बहुत स्लो चल रहा था. फर्स्ट बैंक था, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, तो स्लो 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 चल रहा था. बट लेटर ऑन अगेन थ्री बैंक्स वर एस्टैब्लिश, थ्री डिफरेंट places are like Bengal, Calcutta and the Madras. Okay, later on various act took place. You can read after these acts.
You can also refer textbook, Companies Act है 1913 पे, इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1936। यूजुअली डेट्स लिखना हट जाता है एग्जाम में, इसलिए जस्ट स्किप करोगे तो भी चलेगा ये पार्ट। मेन पार्ट्स मेंशन कर लो एग्जाम में तुम लोग। ओके, द नेक्स्ट पार्ट व्हाट अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर लाइक 1935 एंड इट वाज अ प्राइवेट कंपनी। और उनका एक ये था कि दे यूज टू वर्क ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, बट लेटर ऑन गवर्नमेंट इनिशिएटेड दैट कि यू शुड टेक लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, ये लो इंटरेस्ट पॉलिसी लो, सो दैट कि वी कैन एक्सपैंड एंड समवेयर मनी सप्लाई वगैरह अकोमोलेशन हो सके। दिस वाज द थिंग। Okay, now later on between the period 1913 and 1948 like 1100 small banks were established in India। फिर थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होते गया, बट देयर वर फ्यू रूरल एरिया जहाँ पे बैंक का कुछ भी नहीं था। सो दैट नाउ टू ओवरकम दिस गैप कि रूरल एरियाज में नहीं है, यहाँ पर है, देखिए वी इंडिया केम अक्रॉस NABARD, दैट इज नेशनल बैंक फॉर agricultural and rural development। This was like done to be set there like in 1982। you can see 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, बट 1982 में some way we came across this concept जहाँ पे फिर रूरल एरियाज में बैंक वगैरह आ गए। okay, that's what I think guys, let's stop here। I hope you guys have understood this chapter। I tried to just summarize in a short term because you know very well पूरा एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो अभी टाइम बहुत चले जाएगा। You guys don't have much time, you will be having soon exam, I think 15 is the date when you will be having exam of this term। so I just tried, I hope you guys have understood। please subscribe my channel and please comment करो and बताओ मुझे कि whether you want to make me made like मैं और भी वीडियोस बनाऊँ या नहीं इस पे, प्लीज़ let me know। okay, thank you।